Good evening, students. What is relative atomic mass? See, mass of one proton is equal to 1.67 into 10 to the power minus 27 kilogram. Mass of one hydrogen atom is also equal to 1.67 into 10 to the power minus 27 kilogram. Because hydrogen atom contains one proton and one electron, and the mass of electron is quite negligible as compared to that of proton. Mass of electron is quite negligible as compared to proton. So the mass of hydrogen atom is equal to the mass of proton, which is 1.67 into 10 to the power minus 27 kilogram. Now this is a very complicated number. To avoid these numbers, scientists prefer to use simpler numbers. So in chemistry, we use atomic mass units to measure masses or weights of lighter elements. And atomic mass unit is abbreviated as AMU. AMU means atomic mass unit, or it is simply written as U. U means unified mass. Now the mass of one proton is taken to be 1 AMU. So the mass of one hydrogen atom is also equal to 1 AMU. Mass of one hydrogen atom is equal to 1 AMU, and hydrogen is the lightest element. Other elements have different number of protons and neutrons, and it is not very easy to calculate the masses of all these elements. But it is easy to compare the masses of these elements with some particular element. So John Dalton, which was the first scientist to propose that the masses of other elements can be compared to some रेफरेंस एलिमेंट. एक रेफरेंस एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के मास को हम कंपेयर कर सकते हैं इजीली, एंड ही चूजन हाइड्रोजन फॉर दिस कंपैरिजन. हाइड्रोजन को उन्होंने स्टैंडर्ड एलिमेंट, रेफरेंस एलिमेंट के फॉर्म में चूज किया, जिसको कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता था, एंड इट्स मास इज टेकन टू बी 1 AMU. हाइड्रोजन पर क्योंकि हाइड्रोजन सभी एलिमेंट्स से कंबाइन नहीं कर सकता है, इसीलिए फिर दे शिफ्टेड टू अनदर एलिमेंट, और दूसरा एलिमेंट जो चूज किया गया वो था कार्बन एटम. एंड कार्बन एटम इज हेवियर देन हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन तो हल्का है, बट कार्बन इज हेवियर देन हाइड्रोजन एटम. कार्बन एटम इज 12 times heavier than hydrogen atom. Mass of one carbon atom is equal to 12 times the mass of hydrogen atom. Mass carbon atom का 12 गुना ज्यादा है. So the mass of one carbon atom comes out to be 12 into mass of hydrogen atom, one hydrogen atom, and the mass of one hydrogen atom is 1 AMU. So it comes 12 into 1 AMU, that is 12 AMU. So the mass of one carbon atom is 12 AMU, and carbon easily reacts with most of the other elements, जिससे हम relative atomic mass easily calculate कर सकते हैं. Relative atomic mass means कि masses, उस एलिमेंट के मास को हम रिलेट कर रहे हैं किसी रेफरेंस एलिमेंट से, एंड द रेफरेंस एलिमेंट चूजन वाज कार्बन. सो हाउ कैन वी कैलकुलेट द रिलेटिव एटॉमिक मास? रिलेटिव एटॉमिक मास can be calculated by this formula. Relative atomic mass is equal to mass of one atom of the element, one atom of the element upon mass of one carbon 12 atom. Mass of one carbon 12 atom. कार्बन 12 मीन्स कार्बन जिसका आइसोटोप 12 है, क्योंकि कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं विथ मास नंबर 12, 13 एंड 14, और जो रेफरेंस में चूज किया गया था वो था कार्बन 12 आइसोटोप वाला एलिमेंट.
So the relative atomic mass can be calculated by mass of one atom of the element is divided by mass of one carbon 12 atom. So we can calculate, और इस मेथड से जब कैलकुलेट किया जाए तो हमें रिलेटिव एटॉमिक मासेस डिफरेंट एलिमेंट्स के कैसे आ सकते हैं. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास कम्स आउट टू बी 1/12, क्योंकि मास ऑफ कार्बन 12 एटम कितना है 12, सो 1/12. मास ऑफ ऑक्सीजन एटम comes out to be 16/12. mass of nitrogen atom 14/12, क्योंकि इसका 14 और इसका 12. similarly sodium 23/12 and carbon 12/12 which is 1. तो सभी के एटम रिलेटिव एटॉमिक मास में हमने देखा कि 12 जो है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है, एंड दिस इज ऑल्सो अ कॉम्प्लिकेटेड नंबर. सो इसकी कॉम्प्लिकेशन को भी रिमूव करने के लिए क्या किया गया, रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया. क्या किया हमने, अब मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट अपॉन 1/12 द मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम. अब हमने मास ऑफ वन कार्बन एटम को 1/12 टाइम्स कर दिया, 1/12 टाइम्स. अब इससे क्या होगा, तो मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम, एक कार्बन 12 एटम का मास कितना है 12 AMU. सो 1/12 अगर इसका किया जाए तो कितना हो जाएगा, 1/12 into 12 विच इज इक्वल टू 1 AMU. अगर अब रिलेटिव एटॉमिक मास हम कैलकुलेट करें, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास कम्स आउट टू बी 1/1, क्योंकि ये पूरा डिनोमिनेटर हमारा 1 हो गया. सो 1/1 is 1. Similarly for oxygen it is 16/1, 16. For nitrogen 14/1, 14. For sodium it is 23/1, 23. For carbon it is 12/1, so 12. सो जो डिनोमिनेटर्स में 12 थे वो सारे रिमूव हो गए इस मेथड से. तो दैट इज हाउ वी कैलकुलेट द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. सी हियर नाइट्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है 14. नाइट्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास इज 14. दिस स्टेटमेंट मीन्स दैट नाइट्रोजन इज 14 टाइम्स हेवियर. नाइट्रोजन इज 14 times heavier than the 1/12 the mass of carbon 12 atom. How we define the relative atomic mass? It is the number of times one atom of the element is heavier than 1/12 the mass of carbon 12 atom. कोई भी एटम कितने टाइम्स भारी है 1/12 टाइम्स the mass of carbon 12 atoms. So the atomic mass, relative atomic mass of nitrogen is 14. It means that nitrogen is 14 times heavier than 1/12 the mass of carbon 12 atom. Next is relative molecular mass. Relative molecular mass is also the same as that of relative atomic mass. बस डिफरेंस इतना है इसमें कि वहां हमने एक एटम कहा था, यहाँ हम एक मॉलिक्यूल कहेंगे. द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इज द नंबर ऑफ टाइम्स वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस. वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस मे बी एलिमेंट और इट मे बी अ कंपाउंड, क्योंकि मॉलिक्यूल एलिमेंट के भी होते हैं और कंपाउंड के भी होते हैं. वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस is heavier than 1/12 the mass of carbon 12 atom. बाकी सब definition same है. The number of times one molecule of the substance is heavier than 1/12 the mass of carbon 12 atom. And how we calculate the relative molecular mass? It can be calculated by simply adding their atomic weights, that is relative atomic masses. Suppose we have to calculate the relative molecular mass of water. Relative molecular mass of water. So atomic weight of hydrogen is 1 AMU. Atomic weight of oxygen is 16 AMU.
So the relative molecular mass of water comes out to be 1 into 2 plus oxygen ka 16. So it becomes 2 plus 16, that is 18 AMU. Relative molecular mass of water is 18 AMU. This means that one molecule of water is 18 times heavier than 1 upon 12 the mass of carbon 12 atom. एक मॉलिक्यूल वाटर का 18 टाइम्स हैवी है as compared to 1 upon 12 the mass of carbon 12 atoms. Suppose we have to calculate the relative molecular mass of oxygen. Relative molecular mass of oxygen only. Oxygen means O2. Molecule में O2 होते हैं, सिर्फ O नहीं. सिर्फ O लिखेंगे तो O means oxygen atom. O2 means one molecule of oxygen. So it comes out to be 2 into 16, that is 32 AMU. This means that one molecule of oxygen is 32 times heavier the mass of 1 upon 12 the mass of carbon 12 atom. So this is the way for calculating the relative molecular mass of any given compound. Suppose we have to calculate the relative molecular mass of urea. Urea का formula is CONH2 whole 2. Relative molecular mass of urea. कार्बन का एटॉमिक मास is 12 plus oxygen 16 plus nitrogen 14. But here are 2 atoms of nitrogen, so it comes 2 into 14 plus hydrogen के यहाँ 4 atoms है, so 4 into 1. So it becomes 12 plus 16 plus 28 plus 4, and it comes out to be 60 AMU. So the relative molecular mass of urea is 60 AMU. Now what is the percentage composition of a compound? Percentage composition of a compound is the percentage by weight of each element present in it. उस compound में जितने भी elements हैं उसका percentage कैसे निकालते हैं, तो ये उसका मेथड है. Suppose we have to calculate the percentage of carbon, oxygen, nitrogen and hydrogen and urea. इसी कंपाउंड को ले लेते हैं, इसमें हमें चारों एलिमेंट्स के परसेंटेज निकालने हैं अलग अलग. So how can we calculate? First of all, we are calculating percentage of carbon. To calculate the percentage of carbon, कार्बन पहले देखेंगे हम कितने एटम्स हैं, तो एक एटम, और कार्बन का एटॉमिक मास इज 12. So 12 अपॉन रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, जो टोटल हमारा आएगा वो कितना आया 60. 12 अपॉन 60 इंटू 100, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है, सो इंटू 100 करेंगे. So it comes out to be 20%. Next we are calculating percentage of nitrogen. Nitrogen कितने एटम्स हैं, 2. So it becomes 28 upon 60 into 100. 140 upon 3. 46.66. We can write it as 46.67%. Next, percentage of oxygen. Oxygen 16 upon 60 into 100. It comes out to be 80 upon 3. 26.66. It is written as 26.67%. Similarly, we can calculate the percentage of hydrogen also. Percentage of hydrogen is 4 upon 60 into 100%. So, from this method, we calculate the percentage of element in the given compound. Next, last topic is empirical formula of a compound. The empirical formula is the simplest formula. It is the simplest formula which gives the simplest ratio of the atoms of different elements present in one molecule of the compound. एक molecule of compound में जितने भी elements present है उनका simple ratio निकालना
is called the, वही एक सिंपलेस्ट फॉर्मूला बनेगा और उसे ही हम कहेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव टू कैलकुलेट द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6. C6H12O6. Here the number of carbon atoms 6, hydrogen atom 12 and oxygen atom is also 6. So the simplest ratio comes out to be 1:2:1. So the empirical formula of glucose is CH2O. C1H2O1. 1 नहीं लिखा जाता. So it comes out to be CH2O. The empirical formula of glucose is CH2O. Similarly, if we have to calculate the empirical formula of hydrogen peroxide, hydrogen peroxide is H2O2. hydrogen और oxygen का ratio 2:2 and it comes out simple ratio क्या बनेगा 1:1. So empirical formula is HO. Similarly, empirical formula of C2H6, it is ethane. C2H6, it comes out to be CH3. Empirical formula of C2H4, it is ethene. It comes out to be CH2. The empirical formula of C2H2, it is ethyne. It comes out to be CH. So ये मेथड है एम्पेरिकल फॉर्मूले कैलकुलेट करने निकालने के. अब अगर मैं पूछूं व्हाट इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ शुगर, शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11. C12H22O11. So what will be the empirical formula of this sugar? इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला इतना ही रहेगा. गलती नहीं कीजिएगा, ये कंफ्यूजन हो जाता है कई बार बच्चों को. C12H22O11, 12:22:11 तीनों का रेशियो अगर हम निकाले तो तीनों ही सिंपल रेशियो में नहीं कन्वर्ट हो पाएंगे, या ये दोनों होगा या फिर ये दोनों होंगे, तो इसीलिए तीनों के साथ में नहीं हो सकते. सो एम्पेरिकल फॉर्मूला आल्सो रिमेन्स द सेम C12H22O11. इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला भी यही है और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी यही है. अगर मैं कहूँ CH4 मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी यही है और एम्पेरिकल फॉर्मूला भी यही है. तो कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जिनके मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम होते हैं. एंड हाउ वी कैलकुलेट द एम्पेरिकल फॉर्मूला मास. एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कैलकुलेट करने के लिए सेम वही मेथड है कि एटॉमिक मासेस को ऐड कर देंगे. जैसे हमने देखा ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना आया CH2O. अगर हमें इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कैलकुलेट करना है, इसी का एम्पेरिकल फॉर्मूला मास CH2O का, तो कार्बन का एटॉमिक मास इज 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 into 2 plus oxygen 16. So it comes 12 plus 2 plus 16, 14 plus 16 and it is 30. So empirical formula mass comes out to be 30 kN. This is the way for calculating empirical formula mass, relative molecular mass और to calculate percentage composition. इन मेथड से कैलकुलेट किया जाता है. थैंक यू.